Okay. Okay, so we are discussing about factorial research. We are going to discuss about factorial research design. So, what is factorial research design? Research डिजाइन क्या है? फैक्टर रिसर्च डिजाइन क्या है? Factor means what is factor? Factor research means study about factors, and here factor means independent variables. It means when a researcher want to study or when a researcher want to make a design related to independent variables. So that research design is well regarded as factorial research design. So wait for just 1 minute more. Study about factor. So factor means independent variables. Independent variables. And usually in this design have some other concepts like the labels. So each factors have their labels also, and that labels of factors are used for treatments. तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और आएगा that is treatment. Label, factor and treatments. So three keywords are must included into factorial research design. So what you like इसके बारे में कुछ चीजें आप समझो कि अच्छा फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन का मतलब हो गया कि जब हम लोग आईवी की स्टडी करते हैं आईवी मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेनली स्टडी इनटू that is experimental methods because dependent variables का स्टडी हम लोग कहाँ पर करते हैं into ex post facto method और क्वासी मेथड. तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की स्टडी करने की वजह से फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन में सबसे बेस्ट माना जाता है. और फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन में हम लोग बेसिकली सारे डायमेंशंस की एनालिसिस करते हैं और इसके सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं कि पॉसिबल डायमेंशंस ये हो सकता है, अदर पॉसिबल डायमेंशन में बी दिस, other possible dimension might be this. So we basically explore several dimensions related to any factors. तो किसी भी factor से related जब हम बहुत सारे dimensions को explore करते हैं, so that is factorial research design. तो आप लिखिएगा इसके बारे में आप नोट डाउन करिएगा. Factorial research design is useful in experiments where the effect of multiple factors are examined. Where multiple factors are examined means multiple factors are examined. Right? This research design is used mainly to study in independent variables, not in for independent variables. This research design mainly used to study independent variable, right? So mainly the uses of factorial design
mainly uses of factorial designs in where. Factorial designs mainly use at where, कहां पर करते हैं? इन सोशल साइंस, लिखिए आप इन सोशल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजिकल फिनोमिना, राइट? फुल स्टॉप, अगला, यूजुअली factorial research design apply in the study of large number of factors affecting any particular independent variables, affecting any particular dependent variables, affecting any particular dependent variables, affecting particular dependent variables. So factorial research design और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इट हैव सम टेक्निक, एग्जांपल फैक्टर व्हिच मींस independent variables, right? And labels are used for the mainly treatment, labels are used for mainly treatment, right? Labels and labels are used for mainly treatments. So factorial research design can be in two forms. Factorial research design can be in two forms: simple factorial research design. So here is a simple factorial research design, and second is complex factorial design. So simple factorial design as well as complex factorial research design. It simples are used mainly to or three independent variables. Simple factorial design used for mainly two or three independent variables. Right? Two or three variables. Independent variables, yes. Right? Example, study the effect of study the effect of hard work and training on performance. So hard work and training affects performance.
So what is here hard work? Hard work is IB, independent variable, and training is what? The again IB, and performance is what? DB. So it is 2 IB. So for that, initially hard work can be again तो means suppose एक फैक्टर है A, तो A फैक्टर को हम लोग A1 लेबल और that we can take the label 2. So A1 A2 लेवल पर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक फैक्टर है A and A can be at the two levels, right? At the label 1 and label 2, दो जगह पर। And what about, तो जो इधर है वो basically experimental variable लिखा, basically what is written at here? Experimental variables. So experimental variable is what? Our independent variables. Variables is written right there. And another is here we will write that control variables. So control variable, suppose B is there. So we have also two labels, B1 and B2, right? So their treatments can be write in this box. ऐसे बॉक्स बना के आप इसका ट्रीटमेंट लिख सकते हो। लाइक फर्स्ट का ट्रीटमेंट क्या आएगा? A1 B1, second treatment A2 B1, and next treatment is what? Huh? A1 B2, other is A2 B2. So this is the cell. This is called cell. तो ये जो बॉक्स मैंने बनाए, इस बॉक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल, right? And this is also called cell. This is also called cell. This is also called cell. तो फैक्टोरियल एनालिसिस में पहली चीज क्या होती है? फैक्टर। फैक्टर में भी एट द लेवल्स, जैसे मैंने यहाँ पर हार्ड वर्क ले ली, तो हार्ड वर्क के दो लेवल्स हो सकते हैं, दैट इज वेरी हार्ड वर्क या लो हार्ड वर्क। और उसको अब ऐसे दूसरा परफॉर्मेंस की बात करें तो लो परफॉर्मेंस एंड हाई परफॉर्मेंस। अब अगर सपोज यहाँ मान लो नॉर्मल हार्ड वर्क एंड वेरी हार्ड वर्क, तो परफॉर्मेंस में लो, तो लो और नॉर्मल, लो परफॉर्मेंस एंड नॉर्मल हार्ड वर्क की जो वैल्यूज आएंगे उसको यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे। सिमिलरली लो परफॉर्मेंस एंड वेरी हार्ड वर्क को कंसीडर करेंगे। अदर इज नॉर्मल हार्ड वर्क एंड यहाँ पर जो उसकी वैल्यूज आएंगी परफॉर्मेंस की, उसको भी कंसीडर करें। सो इन दैट केस और जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो हम लोग अलग अलग कंडीशंस में लिखते चलेंगे, ठीक है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हियर इज, हियर बेसिकली वी राइट ये इसके लेवल्स, यहाँ लिखते हैं ना लेवल्स। एंड व्हाट अबाउट हियर? दिस इज ट्रीटमेंट, this is treatment, right? Label 1, here is label 1 and label 2, okay? So simple factorial cell design has very simple design। तो आप लिखेंगे क्या लिखोगे? अब आप नोट बनाना, simple factorial cell design is useful to study impacts of two factors on on are dependent variables। So this design can be represented
into represent into 2 into 2 or 3 into 3, 4 into 4. That is simple factorial design. Normally it is presented 2 into 2. So if there is written 2 into 2, so 2 into 2 means 2 factor. 2 into 2 means 2 factor and 2 labels. It have how many labels? 2 labels. 2 factors and 2 labels. Right? The simple factorial design usually represented by 2 into 2, not 4 into 3, just 2 into 2. है ना? It can be represented as 2 into 2. So, लिखें. It means each column have experimental variables which is treated at 2 levels. Treatment 1, treatment A got, and treatment B got. Sorry, A and you can say A2. Treatment A1 and A2 got. Which is treatment A and treatments. Which treated at 2 conditions, A1 and A2, comma, it have control variables. It have control variables label 1 and label 2. It have control variables labels 1 and labels 2. Control variables have 2 labels, labels 1 and labels 2. Got it? So there is 2 variables, label 1 and label 2. For example, study of right? Example study of placebo effect. Other example लिख सकते हैं observation studies. Observation studies were done. Banduras. Again, it is at the only 2 level of treatment. 2 लेवल कौन सा ट्रीटमेंट दिया था? एक को वायलेंस दिखाया था और दूसरे को लव एंड केयर दिखाया था, राइट? और 2 लेवल ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हो कि जस्ट इन द मॉर्निंग एक बार आप कर लो, एक बार आफ्टरनून कर लो, इवनिंग में कर लो, एंड आफ्टर दैट फिर देखो कि उसके बिहेवियर पे कितना चेंजेस आ रहा है, दैट यू विल नोट डाउन एंड दैट मोटिव वेरिएबल्स यू कैन यूज फॉर योर रिजल्ट्स आल्सो. तो ये पूरा सेल में लिखना है, ये लिखना जरूरी है. यहाँ पर क्या होगा? फैक्टर्स, यहाँ फैक्टर्स और रिसर्च वेरिएबल्स, यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल्स व्हिच हैव आल्सो ट्रीटमेंट्स. तो ये 2 पॉइंट है, राइट? एंड नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिसर्च डिजाइन? व्हाट इज complex factorial design? As you have seen, in a factorial research design, 3 terms are there. First terms is what? That is a factor
and second term is what? Labels, label, and third term is treatment. Third term is what? Treatment. So in a factorial listed design, if in a simple there is a factor, and usually how many factors are there? Two factors. But what about complex factorial listed design? There may be more than two. So you can mention more than two. So we have more than two research factors are there, and so there will be again factor. Is research design will be factors only, and second thing is what? Labels will be there, and third is what? That is, अच्छा यहाँ labels नहीं होता. Means there will be not label. There will be interactions. What will be there? Interactions. So in the complex factorial design, in place of label, there will be interactions. And in place of treatment, you will write also mean effect. You will write mean effect. So factors, interactions, mean effect, and treatments. Get it? What is there? Factor, interaction, mean effect, and treatment. So you can compare फैक्टर की जगह पे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में भी क्या लिखा जाता है फैक्टर्स और लेबल की जगह पे क्या लिखा जाएगा इंट्रैक्शंस और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ट्रीटमेंट की जगह पर मीन इफेक्ट get it so why are writing here interactions can ask also because यहाँ पर एक दो लेवल है एक दो फैक्टर तो है नहीं तो जो एक लेवल ना होने की वजह से अब वो मल्टीपल लेवल हो सकता सपोज हियर इज अ लेवल ए b1 maybe b2 maybe b3 maybe b4 and similarly there may be also multiple factors are there here is like a1 a2 other is a3 maybe a4 is also and so a4 is there तो अब हम इसका लेबल्स नहीं ले सकते बल्कि उसके लेवल का मेन जो इफेक्ट आएगा हम उसको लेंगे ठीक है तो ट्रीटमेंट की जगह पे हम लोग क्या लिखना शुरू करते हैं मेन क्योंकि हर जैसे इमेजिन करो कि कोई एक डिजीज है अब उस डिजीज का अगर हम सारे सिम्टम को लिए अलग अलग मेडिसिन देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बहुत ब्रॉड हो जाएगा इसलिए फिर उसका मेन जो सिम्टम है सपोज उसको फीवर है फीवर की एक मेडिसिन है उससे ये अलग कर लो फिर दूसरा कोई सिम्टम है तो उसको बाद में अगले टाइम पे एलिमिनेट करो सो यहाँ रिसर्चर क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और लेबल्स होंगे तो इसीलिए वो क्या उसका स्टडी करना पसंद करता है इंफेक्शन और मेन इफेक्ट फैक्टर्स या और चीजों पे ज्यादा उतना वर्क नहीं करता तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा a1 b1 a2 b1 a3 b1 a4 b1 and what about here that is a1 b2 a3 get it हाँ अच्छा a2 b2 like that तो बनता चला जाएगा get it so this is that in this way you can write तो आप क्या लिखोगे इसमें लिखना थोड़ी सी बातें हाँ इससे ज्यादा हो गया अब सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ना नोट करो आप उनके मेन इफेक्ट्स को आप लिखो इन दिस सेल सपोज दिस इज सेल ये जो सेल बन रहे हैं इन सेल के अंदर व्हाट यू लाइक मेन इफेक्ट आई मीन जो सेल है ये भी सेल 1 सेल 2 लाइक दैट तो उसका मेन इफेक्ट लिखोगे रेदर देन कि उसका बहुत बेसिक या छोटी-छोटी चीजें आप तो लिखिए हाँ कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल डिजाइन complex factorial design to study the experiment having more than two factor
more than two factors at a time. The design chosen or complex factor design. Full stop. The again the complex या multiple factor design may consider three or more independent factor at the same time. Example, there is a experimental variable, there is experimental variables, experimental variables एक पूरा डिजाइन है. Suppose there is a experimental variables, experimental variables, and there is what? No, first is treatment. So there is a treatment. Suppose treatment A, and we are going to give treatments B. So make its design properly. Treatment A, treatments B. Get it? And it have control variables. Control variable is here. Control variables. Control variables. Suppose there is control variables. Control variable is here. Control variables is have a labels, label 1 and label 2. Again this. Have a labels, label 1 and label 2. Other is, here is control variables, control variable 2. So mention control variable 2. Here is again control variables, control variables 2, control variables 2, control variables 2. So in a one treatment, control variables जा देखो अच्छा रिसर्च की पहचान, अच्छा डिजाइन की पहचान है कि एक्सट्रेनियस इफेक्ट का कम से कम इफेक्ट आपकी रिसर्च पे पड़ना चाहिए. Means extraneous variable if affecting less in your research, then it means your research design is good, your research is good. Getting? तो यहाँ अब जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, there will be labels, right? So again you can write also labels here, label 1, label 2, you can write also label 1 and label 2, label 1 and label 2. You can mention it. Suppose we are going to study the effect of coffee. Study the effect of coffee on our emotional behavior. ऐसा आप कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं. तो अब कॉफी के इफेक्ट की स्टडी करने के लिए
पहले तो हम दो लेवल पर ट्रीटमेंट करें। एक पर्सन को कॉफी ज्यादा देंगे और एक पर्सन को बिना कॉफी दिए, तो दो ट्रीटमेंट करें। पहले में कॉफी दिया हमने और दूसरे केस में इसको कॉफी नहीं। अब कॉफी एक कंडीशन पे हमने कंट्रोल करने के लिए क्या रूल अपनाया, लिवर्स दिया। मॉर्निंग में कॉफी पिलाया और फिर उसका लेवल ऑफ इमोशन चेक करें। फिर दूसरी कंडीशन इवनिंग में उसको कॉफी पिलाया और फिर लेवल ऑफ उसका चेक करें। तीसरी कंडीशन अगेन में यहाँ पर भी हीट है। इसमें हमने क्योंकि कॉफी नहीं पिलाई थी, मॉर्निंग में उसका बिहेवियर इमोशन चेक कर लिया और इसमें चेक कर लिया। तो अब हमने कॉफी को पिला करके बिना पिलाए पहले बिहेवियर को हमने चेक किया। दूसरा, अब इसमें हम कंट्रोल वेरिएबल्स लेते हैं कि एक बार एडल्ट को देते हैं, राइट। एडल्ट को मॉर्निंग में कॉफी देते हैं और फिर उसके बिहेवियर को चेक करते हैं, राइट। और दूसरे कंडीशन में हमने सपोज यहाँ पर एडल्ट ही है, यहाँ एक का मतलब एडल्ट मान, एडल्ट को कॉफी यहाँ पिलाया और उसके इमोशनल लेवल को चेक किया। फिर यहाँ भी हमने एडल्ट को कॉफी नहीं पिलाया और फिर उसके इमोशन को चेक किया, लेवल ऑफ इमोशन। देन यहाँ पर ऐसे मान लो ओल्ड, तो दो चीजें हम कंट्रोल एक साथ कर रहे हैं, एक तो एज कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पर क्या कंट्रोल कर रहे हैं, टाइमिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग का टाइमिंग, ठीक है ना। तो क्योंकि कॉफी का असर किस दो चीजों से हम चेक कर सकते हैं, एक तो देखिए एज के अकॉर्डिंग कॉफी का असर पड़ेगा और दूसरा टाइम के अकॉर्डिंग कॉफी का या इमोशन का असर हो सकता है। असर करेगा कि नहीं, इसकी स्टडी कर रहे हैं हम दो लेवल पर। तो यहाँ दो तरह से कंट्रोल हो गए और ट्रीटमेंट कितने हो गए, एटलीस्ट 2। एक में कॉफी पिला, एक में कॉफी नहीं पिला और फिर उसके बिहेवियर की स्टडी करना, राइट। अब जो भी इंटरप्रिटेशन आएगा उस सेल में लिखते चले, लॉजिक समझना। तो इसको बना दो, कॉपी पे ड्रॉ कर, इसको ड्रॉ मैं पानी पी लिया। So, how many cells are there? At least 8 cells. How many cells? At least 8. Cell 1, cell 2, cell 3, cell 4, cell 5, 7, 8. So this design have what? Two factor, two labels or two treatments. So this design is also called 2 into 2 into 2. Like treatment 2, labels 2 and independent variables 2 into 2 design. 2 into 2 आप इसमें लिख सकते हो। This design have two treatment
two control variables. Two control variables. And researcher explored the main effect of three variables. Three variables कौन से होंगे बेटी? First is one experimental variable. Suppose एक experimental variables, लिख देना, three variables, box in, you should write in box, one experimental variable, one experimental variable plus two control variables. One experimental variables and two control variables. Right? Possible is pair of can be studied is between each pair of variable possible full stop. Right? When the variables may take instead of three, it is called second order interaction. Second order interaction. Full stop. The main effect of experimental variable can be studied by comparing combined mean mean mean, comparing mean and data in cell. Suppose there is a first, then we will select first four. First we will select four things. फोर सेल हमने सेलेक्ट कर लिया, सेल 1 का मीन ले लिया, सेल 2 का मीन, सेल 3 का मीन, सेल 4, इन चारों के मीन का मेन इफेक्ट स्टडी कर लिया। और वी राइट हियर मेन इफेक्ट, और इधर भी हमने मेन इफेक्ट। तो ऐसे दो सबके मेन इफेक्ट लिखते चले जा, सबका ऐड करते हुए चले जा। कलर्स हो गया ना, जैसे मान लो रेड और ब्लू को मिलाया, पिंक और सबको मिला करके लास्ट में कौन सा मेन कलर बना। तो ऐसे ही इसकी स्टडीज में भी होता है। और राइट नाउ फैक्टोरियल एनालिसिस बाय एसपीएसएस एक टेक्निक्स आप जानते हो नहीं जानते हो? एसपीएसएस इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस ऑफ सोशल साइंसेस। एक सॉफ्टवेयर आ गया है, और ये यूपीएससी ने पूछा भी एसपीएसएस के बारे में कि क्या है। तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम पहले हाथ से एनोवा निकाला हो नहीं निकाला हुआ, कॉलेज में हाथ से ही टी टेस्ट निकालते थे, अब कुछ नहीं निकालना पड़ता। इसी सॉफ्टवेयर में रखो सब निकल आएगा, काई टेस्ट यूज सब निकल आएगा, सब उसमें ऑलरेडी प्री प्लान्ड है और उसी को यूज करके आईबीएम कंपनी ने बनाया। तो इसके ऊपर आप मेंस में लिखते हैं, मेंस में आया भी एक बार क्वेश्चन। ओके, आगे लिखना, विथ
increased number of variables, with increased numbers of variables, higher order interaction analysis is possible too. Higher order interaction analysis is possible too. Right? जितना ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहेंगे, अगर उसको सही से इंटरैक्ट कराओगे तो बहुत अच्छा इससे हमें रिजल्ट आउट निकल के आता है. लिखना that this design provides accurate analysis analytical analysis की जगह पे analytical result in economical ways. In economical way. Full stop. The main effects and infraction and infractional effect of more variable in single experiment are possible. तो इसमें ज्यादा से ज्यादा इंफ्रैक्शनल इफेक्ट, मेन इफेक्ट सब निकल गया. राइट? अब इसके अंदर बहुत डिटेल में अगर आप जाओगे तो जो आपकी यहाँ पर इंट्रैक्शंस, वो 3 टाइप के इंट्रैक्शंस है, वो यूपीएससी से रिलेटेड नहीं, पढ़ा होगा अगर थोड़ा बहुत. सिनर्जिक इंट्रैक्शन, एंटागोनिस्टिक इंट्रैक्शंस एंड लीनियर इंट्रैक्शंस आते हैं. राइट? ओवरलैपिंग इंट्रैक्शंस भी एक, तो वो सब बहुत एडवांस लेवल का होगा, वो आपका यूपीएससी से रिलेटेड है. फैक्टोरियल लेवल एनालिसिस इज बेसिकली दिस. राइट? आगे लिखते हैं इसी में. This factorial analysis can be in the form of between and within. In the form of between and within. In the form of between and within. Right? Between means when between and within दो लेवल पे हम लोग करते हैं. complex factorial set design usually we use at 2 levels. Example, if we want to study diving skill of divers. Diving skill what? जो डाइविंग करते हैं लोग, डाइविंग मींस समुद्र में गोताखोर का काम करते हैं, उनको डाइविंग भी बोलते हैं, डाइवर्स. सो डाइविंग स्किल्स ऑफ अ डाइवर. राइट? सो डाइविंग स्किल क्या है? यू विल सी, जो डाइविंग स्किल है, अगर मैं सिर्फ क्या करना चाहूं विदिन, तो विदिन में मैं ऐसे कर सकता हूं कि सपोज एक स्विमर है, सपोज देयर इज अ स्विमर. अब उस स्विमर का मैंने पहले लर्निंग कराया, और लर्निंग कराया कहां पर? क्लासरूम में. क्लासरूम के अंदर आप उसके स्विमर है ना, तो ले जाके फीडबैक के लिए बोला कि ऐसे ऐसे तैरता और समुद्र में फेंक दिया था, क्या मार कर देते ना कई बार घर वाले कि ऐसे जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, लोग गाड़ी उठाओ जाओ. आप उसी तरीके. अब दूसरा ऐसा भी हो सकता है, लर्निंग हम उसको कहां पर कराएं? आप उसी तरीके, और फीडबैक उससे कहां पर लें हम लोग? क्लासरूम.
पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल. सो ओशियन क्लासरूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नेक्स्ट, अब ऐसा भी हो सकता है कि क्लासरूम में ही उसको लर्निंग कराएं, ये भी हो सकता है. तो पहला लेवल क्या है? लर्निंग क्लासरूम में, फीडबैक. सेकंड, हाँ लर्निंग ओसीएम में ही करते हैं. फोर्थ, उसको ओसीएम में क्लास दे दो, फीडबैक. पॉसिबल और नॉट? तो एक ही स्विमर है ना, एक स्विमर को अलग 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 कंडीशंस में आप चेक कर रहे हैं. विद इन, दैट इज कॉल्ड विद इन, एक स्विमर. बट सपोज देयर इज स्विमर ए and swimmer B. If we are comparing the both performance, so that is called B. अब यहाँ पर दो पर्सन हो गए. एक स्विमर सपोज यहाँ X था, यहाँ पर भी एक स्विमर, another swimmer will be. So we are comparing with them. So that is your bit B. आप यूपीएससी कैसे चेक करती है? सपोज साइकोलॉजी के एक बच्चे का नाम X है, उसकी कॉपी से Y के बच्चे की कॉपी, Z के बच्चे, तो ये सारे जितने लोग हैं सब साइकोलॉजी वाले बच्चे. They are checking your performance at there also. Other, your performance is also checking at the level of between. कैसे? Because यहाँ पर सपोज ये साइकोलॉजी का बच्चा A है और हिस्ट्री का बच्चे का नाम B है, ज्योग्राफी वाले का C. So they are checking also कि आप हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले से किससे अच्छा ज्यादा लिखते हैं, हाउ एंड कैसे आप किससे क्यों अच्छा ज्यादा लिख पा रहे हो. That they are also interpreting. That is called basically between and within. तो आप लिख देना. In a complex factorial design, there is two level of analysis of independent variable, of any independent variable. First, within. First is within. When one independent variables study at various condition or levels, example a swimmer whom we want to study diving skill, skills. The several, note down कर दो कि learning in classrooms, Suez, yeah बेटे, that and feedback in post. बहुत सही टाइम पे हो, बट पूरी रिकॉर्डिंग कल की भी देखना और आज की भी. So Prachi should see must last class at again tomorrow's last class of the studies class of the example. We will select boost analysis was mainly used by R.A. Fisher. R.A. Fisher. Yes. R.A. Fisher. R.A. Fisher was a psychologist. He was basically agriculture psychologist. He was not a psychologist, agriculture expert. So he has given the concept of सब भूल गया. That ratio is equal to the concept of SSB.
बी स्मॉल लिखना पड़ेगा, एस एस बी और एस एस डब्ल्यू, सम ऑफ स्प्लिटिंग which was सर ने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। हम एनोवा जब बिटवीन हाउ टू कैलकुलेट डिजाइन सिर्फ इतना, एक बार फिर से बताऊं, बीबी का माफ करिएगा, ये आईबी का स्टडी करना। तो आईबी की स्टडी करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी सर, इसमें एक तो फैक्टर और जिसको ही हम आईबी कहते हैं, एंड सेकंड इज लेबल्स, एंड थर्ड इज जो सेकंड इज, तो मीन इफेक्ट कैसे निकालते हैं सर, बहुत सारे सेल का मीन निकालते हैं और सारे मीन से हम लोग, अब एग्जांपल के लिए बोले कैसे, बोला सर सिंपल सी वैसे एक डाइविंग टेस्ट हमें करना, तो डाइवर्स को हम दो लेवल पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्लासरूम और ओसीएन। अच्छा क्लासरूम में कैसे सर, क्लासरूम में पहले हमने इसको पढ़ाया, कंट्रोल इसको कर रहे हैं कि भाई ले जाके स्टडी कर रहे हैं ओसीएन के अंदर, फिर लाइक दैट। So factor labels and treatment are used for the both research design, but there is a little bit difference, simple and complex के बीच में, और between ये जो है इससे बेटर आउटपुट एनालिसिस के लिए किया, एक्सपेरिमेंट की एनालिसिस में किया जाता है, राइट, और सिंपली जो ऑब्जर्वेशन से करते हो तो खैर हो ही जाएगा, और कॉम्प्लेक्स में जैसे हुआ कि यू वांट टू स्टडी दैट कोविड पोस्ट कोविड इफेक्ट, अच्छा करें तो एक्सपोज फैक्टर हो जाएगा, लाइक यू वांट टू स्टडी द अचीवमेंट्स एंड द हार्ड वर्क्स इन आवर सक्सेस cooperations of family academics and etc in our IS जर्नी, कोई भी टॉपिक लेकर के आप स्टडीज नहीं कर सकते, गेटिंग, सो देन नेक्स्ट, अब इसकी एक आपको रिस्पांसिबिलिटी बनती है, शुड रीड इट्स नोट्स आल्सो, इसके नोट्स ग्रुप में पड़े हुए हैं, so you need to read that notes once, that will give you better, इसी पे क्वेश्चंस आए हुए, एक क्वेश्चन से समझने को नहीं आ रहा, देखो ग्रुप में शायद डाला होगा बच्चों ने क्वेश्चन, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इसी में से ढूंढ करके लिए थे और अभी मुझे नहीं मिला। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बीइंग स्पार्लिंग, बहुत सारे मैंने कहा बहुत क्वेश्चन आए और नया क्वेश्चन नंबर बहुत है, पर मुझे कोई और देखना है दूसरी साइड, फैक्टों का भी स्टडी से मैं पूरा ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से लिख लेना, और बच्चों ने पीछे लिखे हुए हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जैसे अभी हमने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट मेथड पढ़ा, फिर एक्सपेरिमेंट मेथड के डिजाइन पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, और ऐसे फिर अगले केस में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नॉन एक्सपेरिमेंट, और नॉन एक्सपेरिमेंट के बाद ठीक उसकी क्या पढ़ डालेंगे हम लोग, तुरंत डिजाइन पढ़ा, ऐसा समझना आसान हो। हम लोग लेट्स प्रोसीड आवर क्लास,
is here? Here is ex post facto research. Ex post facto research. Experiment or quasi research. तो आप पहला getting my points. And what about quasi research? As you know that in any experiment there is a first IV and second is BV and third is EV. So in a ex post facto research, तो यहाँ लिख देना cannot या can't IV. तो यहाँ पर मैनिपुलेट नहीं कर पाता, मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा किस चीज को? IV. Extraneous. When a researcher study any past event, study any past event, study any past event, where a researcher do not have control and cannot manipulate independent variables and cannot manipulate independent variables, but try to example if a researcher want to study the stress after स्ट्रेस की जगह डिप्रेशन भी लिख सकते हैं, या लेवल ऑफ डिप्रेशन अमंग द पीपल आफ्टर कोविड. गेटिंग? अदर इज जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल, स्टडी आफ्टर अर्थक्वेक. भूकंप आ गया तो भूकंप इस आप दोबारा नहीं लाओगे, अगर लाओगे तो फिर तो कंट्रोल हो जाएगा. एंड देन आप भूकंप ले आ रहे हो, कम ला रहे हो, ज्यादा ला रहे हो, तो इट मींस यू हैव अ कंट्रोल्स, you are manipulating, but भूकंप आपके कंट्रोल में नहीं. it is a natural phenomena. earthquake is natural phenomena. So the next is example study of accidents. Suppose Hindustan में 2 lakh people were killed in a road accident every year. अब वो लोग तो मारे जा चुके हैं, राइट? तो मारे जा चुके हैं तो मतलब रोड एक्सीडेंट हो चुका है, इफेक्ट हो चुका है. अब इसलिए हम लोग क्या स्टडी करना चाहेंगे? कॉजेस, कि किस वजह से 2 लाख पीपल मारे. सो पहला कॉज पता चला कि बिकॉज ऑफ ओवर स्पीड 40,000 पीपल वर किल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर स्पीड. इफेक्ट एंड कॉज स्टडी. इफेक्ट एंड कॉज स्टडी. और नॉर्मली क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट. एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी करते हैं? कॉज. रिसर्च mainly यूज in social science here because due to ethical or personal reason. पर्सनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन. आप किसी को चोर नहीं बना सकते हो, और हाँ वो चोर बन गया तो उसके बाद आप स्टडी कर सकते हो कि चोर की क्या क्या है. सो क्या लिखा आपने?
due to their uh, ethical reasons or constitutional reasons you cannot manipulate. So researcher study mainly existing participants. So researcher mainly study pre-existing participants. Right? Again, full stop. Here, researcher can also not control so that research with any pre-existing groups. Next, select techniques to collect data. Next, establishing categories to classify data. Next, analyze this the finding, right? Within an advantage of ex post facto. Useful analysis but it is less time consuming advantage. The uh, high reliability. Next, अब disadvantage क्या है? Lack of participant cannot be randomly assigned. Think or not?